Hey everyone, welcome back. I'm Prachi and today we'll be sharing how and why I shaved my face. And if you see my face is looking really very clear, that is because just now I have shaved my face and this is the end result. So right now there's no makeup on my face, only lipstick is on. That's because I like lipstick. Before starting the demo, let's talk about some questions which every woman has related to face shaving, and let's quickly start the questions. If you find lighting issue in this video, that is because it's raining outside. मैं मुंबई में रहती हूँ, यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है जिसकी वजह से this is the maximum light I can get because मैं natural light use करती हूँ. So that is the reason. Alright, so let's start with the first question which every woman has, and this is the most common question, that will my hair grow thicker or darker. ठीक है, बहुत सारी लेडीज़ को ये क्वेश्चन होता है कि अब हमें दाढ़ी जैसे बाल आ जाएंगे अगर हम शेव करते हैं, बट दिस इज़ नॉट द केस लेडीज़. ऐसा नहीं हो सकता है बिकॉज वुमेन बॉडी एंड मैन बॉडी इज़ डिफरेंट. वी आर नॉट टेकिंग आउट हेयर फ्रॉम रूट. सो बिकॉज हम उन्हें रूट से नहीं निकाल रहे हैं, तो जैसे बाल आपके थे वैसे ही बाल आएंगे. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि दाढ़ी जैसे बाल उग जाएंगे. सो दिस इज़ द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन. मैं 1.5 ईयर से शेव कर रही हूँ और जैसे मेरे पहले बाल थे बहुत टाइनी स्मॉल बाल वैसे ही आते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं है. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विल माई हेयर ग्रो बैक फास्टर. इफ़ यू कंपेयर इट विद थ्रेडिंग और वैक्सिंग, ऑफकोर्स आपके बाल जल्दी ग्रो होंगे बिकॉज हम हेयर रूट से नहीं निकाल रहे हैं, तो जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ जल्दी होगा. बट जो आपकी नॉर्मल हेयर ग्रोथ है उसी हिसाब से होगा. जब हम वैक्सिंग से या थ्रेडिंग से निकालते हैं, दैट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस जिसमें हम रूट्स पुल आउट कर देते हैं और दैट्स वाई काफ़ी टाइम लगता है हेयर वापस आने में. लाइक फॉर एग्जांपल मेरा हेयर ग्रोथ बहुत स्लो है, दैट इज़ वाई आई शेव माई फेस इन 15-20 days. ओके, मैक्सिमम 15 days. सो ओनली ट्वाइस इन अ मंथ आई वुड शेव my face because मेरी hair growth बहुत slow है. So depending upon your hair growth, your hair will grow faster or slower. Next question is who can do it. Whoever is above 20 they can do it. I won't recommend it for girls, those who are below 20. So once you're 20 and above, then they can do it. Next question is I have acne prone skin, so can I do it? Okay, I won't advise you to touch on your acne. अगर बहुत ज़्यादा acne और पिंपल है और बहुत ज़्यादा सीवियर है तो मैं एडवाइज़ नहीं करूँगी कि आप उसके ऊपर शेव करें. ऑफकोर्स आप साइड के एरिया शेव कर सकते हैं जहाँ पे एक्ने नहीं है, बिकॉज एक्ने और पिंपल को टच होने की वजह से और उनकी कंडीशन ख़राब भी हो सकती है. सो डू नॉट डू इट. Next question is which razor we should use. Now I will show you the razor which I personally use, and we are not talking about the razor जो men use करते हैं, वो 3 blade वाला क्लासिक रेज़र, वो नहीं यूज़ करना है अपने फेस पे. सो विल शो यू इन डेमो कि मैं कौन सा रेज़र यूज़ करती हूँ और कैसे यूज़ करती हूँ. आई थिंक दीज आर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू फेस शेविंग. आई हैव गिवन आंसर्स. इफ़ यू स्टिल हैव एनी, राइट इट डाउन इन द कॉमेंट section and will reply there. And now let's talk about the benefits of shaving your face. Because we are using razor to shave our face, there are quite a few benefits. Like first benefit is it exfoliate our skin. How it exfoliate is because when we shave our face, it removes the dead layer of skin from our face, and that is why our face tend to look more clear. It also makes, because of this exfoliation, हमारी skin बहुत ज़्यादा soft और smooth हो जाती है. एंड इफ़ यू आर समवन हु अप्लाइज मेकअप, मेकअप की एप्लीकेशन बहुत स्मूथ हो जाती है अगर आपके चेहरे पर कोई भी बाल नहीं हो. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, whenever you are shaving, shave it in one direction. Never shave your face in opposite direction. opposite direction में शेव करने से ingrown hair का प्रॉब्लम हो सकता है. सो हमेशा जिस डायरेक्शन में आपके हेयर हैं उसी डायरेक्शन में शेव कीजिए. सो आई थिंक दैट्स ऑल about shaving, its benefits, all the questions. And now let's get into the video. So guys, I use these razor. These are by the brand Tinkle. ये काफ़ी affordable है. You will get this pack for 200 rupees. So 3 razors मिलते हैं 200 rupees में, which is really affordable. And these are eyebrow razors. So ये बहुत ज़्यादा sharp नहीं होते हैं. So they are quite handy. So now let's talk about this razor.
सो ये इस कैप के साथ आता है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी हैंडी. वंस यू यूज़ इट यू कैन क्लीन इट एंड अगेन स्टोर इट बैक. और ये बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होता है. इट मीन्स ये इस तरीके से अगर टच हो गया तो ऐसा नहीं है आपका स्किन इमिडिएटली कट जाएगा. सो दैट्स वाई यू कैन यूज़ इट ईजीली ऑन योर फेस. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेमो. फर्स्ट थिंग आई एम टेकिंग सम रोज़ वाटर टू स्प्रे ऑन माई फेस. मैंने कैमरा और पास ले लिया है ताकि आप लोग क्लियरली देख सकें. अब रोज़ वाटर सूख गया है. आई एम अप्लाइंग एलोवेरा जेल. क्योंकि मैं ड्राई स्किन टाइप हूँ, दैट्स वाई आई प्रिफर अप्लाइंग अ मॉइस्चराइज़र और एलोवेरा जेल बिफोर शेविंग. आई विल रिकमेंड कि आप जो भी स्किन टाइप हो, वेदर ऑयली और कॉम्बिनेशन, अप्लाई सम काइंड ऑफ मॉइस्चराइज़र और डोंट यूज़ इट डायरेक्टली ऑन ड्राई स्किन. आई एम यूजिंग दिस एलोवेरा जेल. दिस इज़ बाय द ब्रांड पतंजलि. चलिए शुरू करते हैं. होल्ड योर रेज़र लाइक दिस. हम ऐसा पकड़ेंगे इन दिस स्लैंटिंग पोजीशन. हम डायरेक्टली ऐसा नहीं पकड़ेंगे बिकॉज यू माइट हर्ट योर सेल्फ. सो होल्ड इट लाइक दिस एंड मूव इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन slowly. So if you want you can hold your skin like this and start moving slowly. I have very small tiny hair, so it is possible that you might not be able to see it, but we'll definitely try to show you. Visible. So let's continue. बहुत छोटे टाइनी हेयर्स हैं. Like this we will continue. You can see this jawline looks more clear as compared to this one. बिल्कुल भी स्किन पे ये प्रेस नहीं करना है. बहुत स्लोली मूव करना है और हर वक्त इसे स्लैंटिंग पोजीशन में रखना है, अदरवाइज कट भी लग सकता है. ओके, मैं इस रेज़र से अपने आईब्रोज़ नहीं बनाती बिकॉज़ इससे भी छोटे रेज़र्स मिलते हैं, उनसे बना सकते हैं, बट आई एम अफ्रेड कि कट लग सकता है. आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय आईब्रोज़, सो आई मेक माय आईब्रोज़ एट होम यूजिंग वैक्स स्ट्रिप्स, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी दिखाया है. इफ़ यू हैवंट सीन इट प्लीज़ गो बैक and watch my that video, so you will see how I make my eyebrows. So that was so quick, easy. अगर आप
ये प्रोसेस करते हैं, it will take hardly 10 to 15 minutes depending upon your hair growth. See, now my face is looking more clean as compared to earlier. और अब शेव हो गया है. I will just wash my face and apply some मॉइस्चराइज़र. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आफ्टर शेविंग यू डोंट वांट कि आप अपने चेहरे को इसी तरीके से छोड़ दें. इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई रोज़ वाटर एंड देन अप्लाई अ मॉइस्चराइज़र. So I have already washed my face. I have pat dry it. Now I will use rose water again. Once it is done, I will apply moisturizer. So I'm done now, and now I will use this moisturizer. This is by the brand Pond's. This is their Super Light Gel Moisturizer. It is good for oily skin as well as dry skin people. So it is really hydrating on skin. Comes in this gel form. Now you can see the result. So you've seen guys how I did it. It was quite easy. It took me 15 minutes to completely shave my face, and this is the end result. I really hope you like it. I've tried to give you all the answers related to face shaving, and if you still have any questions you can drop it down in the comment section, so I will share my experience there. And that's all for this video. I hope you like it, and if you do, please hit like, share, subscribe, comment down below what else you want to see, and we'll be back soon.